डन सो हेलो गाइस तो स्टार्ट करिया हमें बेसिकली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रो जेतिकी थ्योरी थला हमें ऑलरेडी ताको सारी सारचे तो आज हमें बेसिकली डिस्कशन करिया तार एमसीक्यू जो एमसीक्यू गुडा को प्रीवियस ईयर तमरो नीट एंड ओयूटी आसी जी तो सेही एमसीक्यू गुडा हम बेसिकली प्रैक्टिस करिया यस फर्स्ट कमेंट फ्रॉम सर व्हिच सिलेबस sir which OUT syllabus will follow DW okay for your OUT I think you should follow new syllabus of NCERT yes good evening Manasmita good evening तो जल्दी जल्दी जॉइन हुआ एंड इमीडिएटली हमें गोटे मिनट रे स्टार्ट करिया लगला चलो तो स्टार्ट करिया आउ वेस्ट करियानी फर्स्ट क्वेश्चन तो पाखे अछि जोटा होची नीट 2018 रो क्वेश्चन हैला तो मैथ्स तो आइटम अच्छा मते खाली टिके कुओ कि जहा तुमको देखा होची स्क्रीन रे भलसे लेटर गुडा क्लियर देखा होची तो जो माने अच्छो खाली जस्ट कमेंट करो तुमको जो लेटर गुडा सब क्लियरली विजिबल और नॉट देन हमें स्टार्ट करियो 2018 रो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पूरा इजी क्वेश्चन यार चैप्टर भलसे पढिबो किछि नाही क्वेश्चन रे यस चलो फर्स्ट क्वेश्चन कोन हबो मैथ्स तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 2018 रो क्वेश्चन अबाउट द ट्राइकस्पिड valve and the bicuspid valve and the semilunar valve स्क्रीन कटि होछ मते राउजर हां कटि दिला कोन आंसर yes that is tricuspid valve obviously हमें जानि छे where is the tricuspid valve is located yes the tricuspid valve is located between the right atria and the right ventricle and the bicuspid valve is located between the left atria and the left ventricle then answer kon hobo tricuspid valve between the right atria and the right ventricle bicuspid valve between the left atria and the left ventricle semilunar valve between the right ventricle and the pulmonary artery so answer will be a triple I so option A देखो नीट रे एक्चुअली नो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम जदि गोटे ऑप्शन जदि पूरा परफेक्टली कॉलम वाला क्वेश्चन रे यदि गोटे क्वेश्चन तुम बेसिकली जोड़ी दोछ ताले तुमरो सब क्वेश्चन रे आंसर सॉल्व हो जिवो तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन ए हबो ट्राइकोस्टिड वाल्व कोठी सेमिलुनर वाल्व कोठी बाइकोस्टिड वाल्व कोठी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये सब मन पड़छ तो कोठ आछि दैट इज द फर्स्ट कांसेप्ट हमरो fibrinogen globulin albumin these are the plasma protein and the question about what is the function of fibrinogen and globulin and albumin you have to join the column 1 and column 2 then what will the answer of question number 2 fibrinogen globulin and albumin most important जेतोळे हमें पढैतिले 100% मु ताको पूरा प्रायोरिटी देकी कहितिले these are the most frequently asked question बार बार कहिछि कि क्वेश्चन उडा मन रखा पे देन आंसर कोन हबो obviously fibrinogen which is present in the blood in an inactive form and fibrinogen काम होजी for the clotting and coagulation right and globulin which is also a plasma protein and the most important function of globulin for the defense mechanism and yes the important function of albumin is osmotic balance so answer will be fibrinogen A double I where is the option A double I yes one and only option that is option D next question number 3 adult human RBC are enucleate obviously हमें जानि छे RBC रे न्यूक्लियस एब्सेंट तो क्वेश्चन इज अबाउट श्रिया स्नेहामयी तृप्ति संतोष पूर्वा धनश्री सोनालिसा शुभस्मिता ऐश्वर्या एमडी जावेद संतोष शुभांशी दीप्तिमयी क्वेश्चन पचारला कि बेसिकली ह्यूमन आरबीसी टा न्यूक्लिएट माने हमें जानि छे न्यूक्लियस इज एब्सेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर मोस्ट एप्रोप्रिएट explanation for this feature and this question is from the NEET 2027 sorry 2017 question तो क्वेश्चन पचार कि आरबीसी टा न्यूक्लिएट या भीतर को ऑप्शन टा ताको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दउछि they do not need reproduce they are somatic cell they do not metabolize now all their internal space available for the oxygen transport and the 100% right answer is all their internal space is available for the oxygen transport and answer will be only 4 yes बढ़िया अछि समस्त का आंसर डी अछि शुभस्मिता प्रज्ञा परमिता अंकिता काजल बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 4
I think in that side. The hepatic portal vein drain the blood liver drain the blood to liver from, and this is the most unique concept. Basically पचार कि hepatic portal vein blood को liver को जो पहुंचाऊँची that is कोठू, from which organ, kidney, heart, stomach, intestine, and the right answer will be yes, right answer intestine. And already हमें जानी छे that is जहाँ भी जहाँ हमें food intake करचे कि alcohol intake करचे कि maximum glucose intake करचे, so से food गुड़ाक आम जानी all the foods, or we can say that maximum food are absorbed in the small intestine, maximum food, and basically small intestine जो absorb हुए, तो after the absorption first it will go to the liver, कहा द्वारा जीवो hepatic portal vein, तो intestine रू first hepatic portal vein देखि liver रे पहुँचीबो, then liver is a organ just like the, we can say that it is a manager of our body जे कि rectify करिवो एंड जदि हाईली टॉक्सिक अमोनिया अछि ताकू यूरिया रे कन्वर्ट करिवो, तो ये सब साइकिल हो, एंड जदि एक्सेस ग्लूकोज हम इनटेक करथिबा इट विल कन्वर्ट टू द ग्लाइकोजेन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, तो आंसर होची इंटेस्टाइन, परफेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द ब्लड सेल whose reduction in number can cause the clotting disorder, and the question is NEET 2016 रो क्वेश्चन, कोटा ब्लड सेल जे कि रेस्पोंसिबल फॉर द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कि कहार नंबरटा रिड्यूस हो गले क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हबो। ऑब्वियसली हमें जानि छे एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, हमें स्ट्रिक्टली जानि छे आरबीसी अदरवाइज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी अदरवाइज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, and the platelet is otherwise called as thrombocytes, and the most important function of thrombocytes is for the blood clotting and coagulation. So yes, that is if the thrombocyte level will low, obviously clotting related disorder we will face, so answer will be D. तो क्वेश्चन नंबर 5 रो D समस्त ठीक अछि, सूरज, शक्ति, काजल, सोनालिसा, शुभांशी, लक्ष्मी, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सेरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड इन, सेरम टा बेसिकली ऑब्वियसली हमें जानि छे व्हाट इज सेरम, सेरम हमें जानि छे दैट इज प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, or theoretically we can say that if we will remove the clotting factor from the plasma it is called as serum, and obviously the right answer will be lacking the clotting factor, perfect। 6C, yes बढ़िया अछि, and a question I think yes 2016 रो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 2016 रो क्वेश्चन, नीट 2016 रो क्वेश्चन, blood pressure in the pulmonary artery is more than that in the pulmonary vein, less than in the vena cava, same as that in aorta, more than that in the carotid। देखो बेसिकली हमें जानि छे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, एंड ऑब्वियसली हमें जानि छे आर्टरी रो लुमेन रो डायमीटर टा बहुत कम एंड थिकनेस टा अधिका, द डायमीटर ऑफ लुमेन इज लो एंड द थिकनेस इज हाई, दिस इज द आर्टरी स्ट्रक्चर, एंड इफ आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वेन, वेन रो लुमेन रो डायमीटर इज मोर एंड थिकनेस इज लेस, राइट। सो क्वेश्चन पचारला कि ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली हमें जानि छी गोटे छोटो पाइप भितरे मैक्सिमम प्रेशर जीवो ना लार्ज पाइप भितरे, जहार गोटे छोटो होलो पाइप माने जो पाइप रो डायमीटर टा स्मॉल हेतिबो ता भितरे ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रेशर रे जीवो वाटर हो किबा वाटर जीवो, सो दैट आर्टरी एंड वेन भितरे लुमेन रो डायमीटर कहार स्मॉल, आर्टरी रो, सो ऑब्वियसली लेस डायमीटर जहार थिबो प्रेशर अधिया पड़िबो, सो आंसर विल बी मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन थारु blood pressure in the pulmonary artery will be high। And who can say what are the layers of blood vessel, what are the layer of artery and vein, who can say what are the layers of artery and vein, Santosh, Javed, Snehamoyi, what are the layers of artery and vein? Yes, tunica externa, tunica media and tunica interna or intima, yes perfect Ankita। Artery and vein possess 3 layers, and the outermost layer is tunica externa, and the middle one is tunica media, and the inner one is tunica intima or interna, perfect। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इन mammals which blood vessel would normally carry largest amount of urea, mammals मानको विषय रे बेसिकली को वेसेल टा
carry largest amount of urea. देखो मन अच्छी सेम कॉन्सेप्ट हेपाटिक पोर्टल सिस्टम रो कॉन्सेप्ट इंटेस्टाइन रु जदि आम एक्सेस ग्लूकोज इंटेक करछे से एक्सेस ग्लूकोज गुड़ाक लिभर को जीवो लिभर रे ग्लाइकोजेन फॉर्म रे स्टोर होबो एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस कि जदि आम अल्कोहल पिउछे सी भी लिभर रे जीवो लिभर ताऊ डिटॉक्सिफाई करिवो एंड लिभर को जो जीवो बेसिकली द हेपाटिक पोर्टल भेन देखो मन रख स्ट्रिक्टली मन रख हेपाटिक पोर्टल भेन इट इज ए टाइप ऑफ भेन which will carry the blood from the intestine to the liver. Then जदि आम जानिछे there is a cycle also occur in the liver. liver रे गोटे साइकिल हुए जो साइकिल को आम यूरिया साइकिल बोली कहे जो साइकिल रे कौन हुए जदि हाईली टॉक्सिक अमोनिया प्रोडक्ट जदि आम बॉडी रे किछि होउची सो लिवर कौन करिवो ना हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया रे कन्वर्ट करे एंड आम एक्सप्रेशन रे पढ़िबा द टॉक्सिसिटी ऑर्डर ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड इज स्ट्रिक्टली मन रख सबुठारो हाईली टॉक्सिक होची अमोनिया देन यूरिया देन यूरिक एसिड तो लिवर रो काम कोन ना डिटॉक्सिफाई करिवो डिटॉक्सिफाई माने कोन ना हाईली टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करिवो लेस टॉक्सिक यूरिया रे देन कन्वर्ट कला परे हेपाटिक भेन कोन करिवो ना यूरिया को दैट इज पठेबो दैट इज हमर लार्ज भेन को तो ऑप्शन होची कोन ना हेपाटिक भेन हेपाटिक पोर्टल भेन होची इंटेस्टाइन रो लिवर को आनिबो देन लिवर रे अमोनिया टा यूरिया रे कन्वर्ट होबो जहा को कहा जाय यूरिया साइकिल देन अमोनिया टा यूरिया रे कन्वर्ट हे गला परे हेपाटिक भेन देखि से जीव होची भेन को ओपनिंग होबो लार्ज भेन को ओपनिंग होबो हेपाटिक पोर्टल भेन इंटेस्टाइन टू लिवर देन लिवर रु हेपाटिक भेन टा ओपन होबो मेजर भेन को सो आंसर विल बी हेपाटिक भेन 8 नंबर ए यस बढ़िया अछि समस्त ठीक अछि शक्ति शुभांशी सूरज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following animal has the two separate circulatory system? Obviously, two separated circulatory system पचारछि कोन होबो आमे जानि छे birds and mammals मानकर basically four chamber head and those organism having four chamber head they can do double circulation so that answer will be whale. Yes, the right answer will be whale. Single circulation as you know that single circulation that is fishes माने जो मानकर बेसिकली टू चैम्बर हार्ट obviously as you know that two chamber heart that is for the fishes and fishes will do single circulation amphibia and the reptiles possess three chamber heart so they will do incomplete double circulation and birds and mammals those who are possessing four chamber heart will do double circulation clear चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल द सेकंड हार्ट साउंड व्हेन आमे जानि छे बेसिकली दीटा हार्ट साउंड हमर प्रोडक्शन हुए द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लॉब लॉब टा होचे फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज डॉब सो क्वेश्चन इज अबाउट द सेकंड हार्ट साउंड डॉब तो कोन हबो आमे जानि छे व्हेन द हार्ट साउंड लॉब विल प्रोड्यूस यस फर्स्ट हार्ट साउंड लॉब केतबेले प्रोडक्शन हुए स्ट्रिक्टली मन रखिबो ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड valve ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve and the second heart sound dove will produce during the closure of semilunar valve. You have to remember always the heart sound lobe and a dove will produce during the closure. जेतबेले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve क्लोज होबो सेतबेले हार्ट साउंड लॉब एंड जेतबेले बेसिकली सेमिलुनार valve क्लोज होबो सेतबेले हार्ट साउंड डॉब तो आंसर कोन होबो AV node receive the signal semilunar valve close down the blood flow from the vessel to the ventricles then answer will be yes the answer will be D semilunar valve closed down perfect चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एंड क्वेश्चन थिला नीट 2015 रो क्वेश्चन देन चलो 11 नंबर क्वेश्चन 2015 जोटा एग्जाम कैंसल होइतला तो कोन होबो एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस by which the erythrocyte formation takes place एरिथ्रोसाइट हमें क्या कुछ आरबीसी को तो एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन को हमें कोई एरिथ्रोपोइसिस and the question is about where is the erythropoiesis starts and the answer will be red bone marrow as you know that red bone marrow
रेड बोन मैरो रे बेसिकली एरिथ्रोब्लास्ट सेल थाए एरिथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट कौन द सेल व्हिच विल प्रोड्यूस द एरिथ्रोसाइट और वी कैन से दैट इमेच्योर आरबीसी तो एरिथ्रोब्लास्ट सेलटा बेसिकली कौन हम ना एरिथ्रोसाइट हम बा मैच्योर आरबीसी हम क्लियर and immature RBC is converted to the mature RBC. The process is called as erythropoiesis. So red bone marrow will be answer. Next question, question number 12. Which one of the following is correct? ताको भितर कोटा correct? को काजल, अभिस्मिता, शुभांशी, शक्तिरंजन, रविंद्र, अंकिता, सोम्यालिप्ता, एमडी जावेद, लक्ष्मी को कौन हम बढ़िया क्वेश्चन तापर अच्छी एंड ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें जानी से सेम 2015 रो कैंसल क्वेश्चन साइरस महाती माय एंटायर फैमिली मेंबर्स नाउ सी योर एंटायर डिस्क्रिप्शन सून लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग फ्रॉम देयर साइड कीप इट अप एक्सीलेंट मार्क फ्रॉम माय फादर थैंक यू सो मच साइरस ब्रदर एंड बहुत 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 नमस्कार तुम पेरेंट्स को बेसिकली फादर एंड मदर को एंड चलो which one of the following is correct आको भितर कोटा करेक्ट तो लीफ ब्लड प्लाज्मा स्ट्रिक्टली आम गोटे कथा जानिचे जो आम बेसिकली जानिचे ब्लड क्या नहीं तैयारी आम जानिचे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड यस ब्लड को जब सेंट्रीफ्यू करिया ब्लड रो 55% हमको मिल जिवो कोन ना प्लाज्मा एंड मन रे ये भी क्वेश्चन आछो प्लाज्मा कोन प्लाज्मा दैट इज प्लाज्मा रे होचे 90 रो 92% वाटर थाए एंड 6 रो 8% प्रोटीन थाए एंड ब्लड रे 55% प्लाज्मा को छाड़ी देले आउ 45% हमर मिल जिवो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट क्लियर ब्लड इज द connective tissue or we can say that the fluid connective tissue which possesses 55% plasma and 45% RBC WBC platelet and already we have an idea about the function of RBC WBC platelet and if I will zoom the plasma what components are present in plasma there is 90 to 92% of water present and 6 to 8% is protein so question पचाला कौन होबो सेरम तो केबे भी हेले ब्लड प्लस फिब्रिनोजेन नो आमे जानिचे द टर्म सेरम इज इफ आई विल रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन फ्रॉम द प्लाज्मा इट इज कॉल्ड एज सेरम सो 100% रॉन्ग प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी यस द आंसर विल बी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बट बहुत थोड़ा नीट रे पचारची स्ट्रिक्टली मन रखिबो ब्लड जोटा हमर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहिला प्लाज्मा केते परसेंट एंड प्लाज्मा रे केते परसेंट वाटर अछि 90 to 92% and protein and कौन protein तार function कौन मन रखा दरकार चलो next question number 13 and the question from 2015 NEET cancel blood pressure in the mammalian aorta maximum during अच्छा first question mammalian aorta जीवा पूर्वरु बेसिकली जो dorsal aorta रहिला dorsal aorta कोठु को पर्यंत ब्लड नहीं पहुंचे deoxygenated blood पहुंचे हेल्प करे ना oxygenated blood पहुंचे हेल्प करे एंड हार्ट रो को चैम्बर रो कोठी की ब्लड को ट्रांसफर करियर हेल्प करे डोर्सल आउटा ऑब्वियसली हमें जानि छे सपोज हम रफ डायग्राम करबा inferior vena cava which will carry the deoxygenated blood from the lower body parts superior vena cava which will carry the deoxygenated blood from the upper body cap and they will open to the right atria then after the deoxygenated blood will go to the right ventricle then after the right ventricle the deoxygenated blood will go to the lungs for the oxygenation by pulmonary artery and after the oxygenation or we can say that after the diffusion of oxygen from lungs to the pulmonary artery the oxygenated blood will come from lungs to the left atria through the pulmonary vein and after that the oxygenated blood from the left atria to the left ventricle by the bicuspid valve or mitral valve it will go to the different body parts through the dorsal aorta and the right answer dorsal aorta it is a type of artery or it is a blood vessel which will carry the oxygenated blood from the left ventricle to the different body parts and yes the systole of left ventricle perfect and समस्त आंसर ठीक भी थिबो बढ़िया अछि शुभांशी ना ना देखो न्यू सिलेबस रे डीडब्ल्यू तमे पुराना सिलेबस पढ़ो न्यू सिलेबस रे मु एथि पई कहली न्यू सिलेबस रे बहुत किछि जिंस ऐड कराई छी
तो न्यू सिलेबस रे जो ऐड पोर्शन गुडा ताकू पढ़ो एंड प्लस ओयूटी ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ जो जो चैप्टर गुडा रिड्यूस ହେଇଛି ताकू तमे चाहनी कि छाडी देबा ପାଇଁ सेगुडा पढ़ो किंतु न्यू बही भी तुम पाखे थिबा दरकार कहीं न्यू बही रे किछि किछि चैप्टर रो पोर्शन ऐड ହେଇଛି सो सेति ପାଇଁ कहली कि न्यू बही तुम फॉलो करो किंतु जोटा पुराना बही रो रिड्यूस ହେଇଛି ताकू जहाल भी टिके टिके टच अप करो वर्षे टाइम रहला आराम से टच अप करि जियो बाकी बुझियो तो क्वेश्चन गुडा सब सूरज हो सूरज एंड संजना अंकिता पूर्वा पूर्वा धनश्री सूरज सोनालिसा काजल बुझी पारछो तो जहाँ मैं डिस्कशन करछे यस चलो सूरज नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एंड क्वेश्चन फ्रॉम द 2014 सब जाक नीट पीवाई के क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज अबाउट person with the AB blood group is considered as the universal recipient because he has both A and B antigen on RBC but no antibody in the plasma both A and B. Obviously the question is about the AB blood group and as you know that those person who have AB blood group basically कौन हुए ना both A and B antigen present on the surface of RBC and where is the option no antigen भूल both A and B antigen in the plasma पूरा 100% wrong strictly हमें जानी छे always antigen present in the surface of RBC but here it is mentioned plasma so wrong then both A and B antigen present on the surface of RBC but no antibody yes perfect and question number 14 is A बढ़िया अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही भाया क्वेश्चन पढ़ुची क्वेश्चन लेवल किछि भी नाही टोटाली ऊपर जदि जने फुल्ली एनसीईआरटी को भल से पढ़ी थिबो सब क्वेश्चन को टैकल करिवो जम्मा पूरा टॉप लेवल रा हायर क्वेश्चन करिया कि दैट इज पीएचडी लेवल क्वेश्चन करिया प्रैक्टिस करा दरकार नहीं जहां पर कि तुम सिली क्वेश्चन भूल करिवो जो लेवल रो क्वेश्चन हम पचाउची से लेवल रा हमर प्रिपरेशन थिबा दरकार चलो कांसेप्ट पई देखि परियो बट प्रैक्टिस पई सबोळे पई पीओआई के आगो जो भी चैप्टर पढ़ो सबोळे पई दैट इज जो भी चैप्टर पढ़ो आगो सबोळे पई पीओआई के क्वेश्चन करिवो पीओआई के क्वेश्चन कला पर तुम देखि परिवो मु जो चैप्टर पढ़ीची से चैप्टर क्वेश्चन डा मते आसुची ना नाही एंड जे मते पढ़ीचंती बाकी से जो पढ़ेला बेले जो पॉइंट गुडा कहिसंती कि एडा सो पीओआई के क्वेश्चन एटा मन रखो एक्चुअली से कथार किछि प्रायोरिटी अछि ना नाही एंड मु जेतोळे पढ़ाए सब पिला मानको सेम कथा कोइ कि भाई रे आकु मन रख आखि मुझे मन रख पढ़िबो चलो हाउ डू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट sympathetic and parasympathetic these are under the autonomic nervous system चलो बेसिकली हमें जानि छु कोन हमरो nervous system means brain spinal cord nerve all together comprises of a nervous system and it is central nervous system and the peripheral nervous system under the central nervous system brain and spinal cord and under the peripheral nervous system that is somatic and autonomic and in autonomic that is sympathetic and parasympathetics are there तो क्वेश्चन पचारला parasympathetic कोन करे reduce the both heart rate and cardiac output ना increase ना देखो सबोळ पई sympathetic टा कुची heart rate को increase करे cardiac output को increase करे parasympathetic रो काम होची decrease करे जेतिक सब unconscious function all are regulated by the autonomic nervous system जेतला हम nervous system पढिया सेतोळे पढिया sir which language you use Roxon Khatun I am using our mother tongue that is Odia and also I am using English so the answer will be reduce the both heart rate and the cardiac output next question number 16 and this is the figure based question obviously NCERT diagram and the question is about the given figure shows the that is the plan of blood circulation in humans with the levels of A and D देखो दिस इज द हार्ट मु टिके स्ट्रक्चर तुम पे इजी कर दूची एंड दिस इज द राइट एट्रिया वन सेकेंड टिके बड़ कर दवा सपोज दिस इज द हार्ट स्ट्रक्चर टा ये पचार एंड ऑलरेडी किसी पिला को भी आस सारे राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल तो बेसिकली सपोज दिस इज द भेना कावा राइट एट्रिया को ओपन हैला देन राइट वेंट्रिकल रो एटा गला कोठी ना दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एटा लंग्स हां तो लंग्स को गला किए नहीं कि ना पल्मोनरी आर्टरी जोटा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड एटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इतरे कर देले क्लियर हो
so that I am using this color for the deoxygenated blood. Pulmonary artery ଦେଇକିରି ଗଲା to the lungs, then after pulmonary vein ଦେଇକିରି ଆସିବ lungs ରୁ left atria କୁ, left atria ରୁ left ventricle, dorsal aorta ଦେଇକି, this is the body ର different part, body parts. So question पचारला कि basically diagram को नेकी vena cava takes the blood from the body parts to the right auricle. ठीक अछि, vena cava टा body parts रो right auricle को नउची and partial pressure of carbon dioxide is 45. मनोज तो partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the oxygenated blood 95 mmHg and 40 mmHg, and the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide in the deoxygenated blood will be 40 45. So पचारछि भेना काभारे that is the partial pressure of carbon dioxide is 45. Yes, right, 45, and answer will be A. Letter अर्जुन चंद, आज तुम इंटीमेशन लेटर आसीबो आज 30 तारिख. सो यस पूर्वा धनश्री, ठीक अच्छे, चलो आसी आज आज आसीबो अर्जुन. चलो आंसर हम कौन ना सी. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. क्वेश्चन नंबर 16 पर एपटे क्वेश्चन नंबर 17. The diagram given here is the standard ECG. As you know that what is the full form of ECG? जो machine टा basically यूज करा जाए हमरो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ machine टा होची ग्राफ ECG सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड जो रिप्रेजेंटेशन करा जाए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ताको कहा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. उल्टा आ भाबिबनी कि मशीन टा होची ग्राफ आ ग्राफ टा कहा जाए ग्राफ. उल्टा द मशीन इज ग्राफ एंड द graphical representation is gram. So answer will be, and question is about the P wave. As you know that P wave का denote करे contraction of atria, or we can say that systole of atria, or we can say that depolarization of atria. So answer will be, and QRS का represent करे, QRS होची depolarization of ventricle or systole of ventricle or contraction of ventricle, and T wave represent करे repolarization of ventricle. and answer P विषय पचार तो P कौन होबो, contraction of both the atria. ठीक अछि. C सूरज, काजल, अभिस्मिता, सोनालिसा, संजना, शक्ति रंजन, ठीक है. चलो संतोष, चलो. The question is question number 18, diagram question. The figure shows blood circulation in human with level A and D, and select the option which given with the question. पचासी कौन देखो ऑप्शन टा कटि जाउथिबो ऊपर नेउची. B टा A टा B टा होची गोटे ब्लड कैपिलरी. हां एटा होची कोन छोटो लुमेन होची माने कोन आर्टरी, एटा लार्ज लुमेन अछि माने भेन, आ एटा अछि ब्लड कैपिलरी जोटा कि गोटे सिंगल लेयर. तो बी रिप्रेजेंट द कैपिलरी थिन विदाउट द मसल लेयर, भूल विथ द टू सेल लेयर, भूल सिंगल सेल लेयर क्रिएट एंड विथ हबनी. भेन सी टा अछि भेन थिन वॉल एंड ब्लड फ्लो जग्स देखा जग स्पोर्ट्स किछि एठी ब्लड देखा होची. पल्मोनरी वेन डी होची पल्मोनरी वेन. व्हेयर इज द डी is pulmonary vein. Yes, takes the oxygenated blood. Yes, ठीक अछि, take the oxygenated blood, and the partial pressure of oxygen is 95 mmHg, and artery is thick walled and the blood flow evenly. That is the pulmonary vein and takes the oxygenated blood. Yes, obviously हे परिबो pulmonary vein जे कि oxygenated blood supply करछ, and partial pressure oxygen is 95. Clear? चलो next question. Karnataka NEET. The figure shows a human blood cell. Identify it and gives it characteristics. Diagram I think तुम्हारा मन थियो कि न मन थियो पूरा diagram, and diagram टा तुमको एटी क्लियर भी शो करूनी, so that
बट ये डायग्राम होची बासोफिल्स रा एटा होची बासोफिल्स रा डायग्राम तुम एटा शो करनथिबो एटा स्किप करो काहे ना तो फोटो देखा नथिबो ठीक से एपट चलो क्वेश्चन नंबर 20 को आसो क्वेश्चन नंबर 20 a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion easy question यार कौन हो आंसर 20 नंबर 20 नंबर आंसर को ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन जनकर रोड एक्सीडेंट इज अननोन ब्लड ग्रुप ताले पचारछि कि कोन हबो और ऑब्वियसली दैट इज ब्लड ग्रुप डोनर कोन हितियो दरकार यूनिवर्सल डोनर ओ हितिबो तो ब्लड ग्रुप O and universal donor is O negative universal recipients AB positive most abundant blood group होची O positive चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following human organ often the called the graveyard of RBC कहा को बेसिकली graveyard of RBC को जाए क्वेश्चन जेतले AIPMT होतला एग्जाम नीट प्रीवियसली होतला AIPMT तो प्रीलिम्स एंड मेन भीतर क्वेश्चन थिला कि कहा को कहा ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज स्प्लीन नेक्स्ट क्वेश्चन बंडल ऑफ हीज इज अ पार्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बंडल ऑफ हीज कार पार्ट एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हीज पर्किंसी फाइबर these are the part of obviously heart and the answer will be heart next question which of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood yes which plasma protein is responsible for the coagulation of blood कौन अब आंसर क्वेश्चन तुमको आसुची आम जहाँ पढ़ीचे से टाइप क्वेश्चन पचारुची जेति कि आम पढ़ीचे प्रज्ञा प्रज्ञा परमिता एंड आमर सोनालिसा सौम्या लिप्ता जहाँ आम पढ़ीचे क्वेश्चन गुड़ा तुमको आसुची तो एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुभश्री काजल सोनालिसा संतोष डायमेंशन इनसाइट पूर्वा धनश्री एंड दिस इज ए नाइस नेम चलो शक्ति रंजन यस देन क्वेश्चन 24 आर्टरी आर बेस्ट डिफाइंड एज द भेसेल आर्टरी टाको हमें कौन कहि परिया गोटे एम्प्टी ब्लड भेसेल जे सप्लाई करे ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन ना carry the blood away from the heart to different organ ना कौन को आर्टरी बोले हमें काहा कहि परिया आर्टरी बोले हमें काहा को गोटे बेस्ट डिफाइन करि परिया आर्टरी आर द बेस्ट डिफाइंड एज सप्लाई द ऑक्सीनेटेड ब्लड ना carry the blood away from heart to different organ देखो बढ़िया क्वेश्चन मु ऑलरेडी तुम तला पढैतला मैं आ गोटे कथा कहितले ऑल द आर्टरी आर अराइज फ्रॉम आर्टरी गुड़ा कौट बाहरती हार्ट रु बाहरती भेन गुड़ा कौट बाहरती टिश्यू रु बाहरती तो आर्टरी गुड़ा हार्ट रु बाहरती तो ऑप्शन कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन भी हेई परिबो सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन भी हेई परिबो ताले कोन हबो यस बढ़िया यार काई भी हबो जानि परलो तो काई कि ना सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन हो काना हम जानि छोटे एक्सेप्शन अछि यस हम जानि छे आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करे परफेक्ट बट देयर इज एक्सेप्शन एंड इट इज पल्मोनरी आर्टरी जे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करे एंड इट बार बार भी हम कहि दैट इज आर्टरी इज रेस्पोंसिबल टू कैरी द ऑक्सीनेटेड ब्लड बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी यस डायमेंशन इनसाइड परफेक्ट सो दैट आंसर विल बी दैट इज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट रु बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को निये होची के ना हमर आर्टरी तो काहे ना सब आर्टरी तो ऑक्सीनेटेड ब्लड नुह ना तो एटा 100% ठीक हेई परिबोनी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर को नेकी कोटा करेक्ट 130 90 mm HCG considered high and required treatment 100 to 50 obviously easy question को which one of the following is correct regarding the blood pressure को नेकी कोटा करेक्ट संजना सूरज डायमेंशन अंकिता एमडी जावेद obviously 190 and 110 mg that is harm for the vital organ like brain and kidney जोटा के मैं हाई ब्लड प्रेशर बोली कहूची परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
देखो सेम क्वेश्चन है पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप 2011 क्वेश्चन बोधे अननोन ब्लड ग्रुप माने आखि मुझी की टाइप ओ देन पीक्यूआरएस रे क्वेश्चन पचाला करेक्टली इंटरप्टेड बिलो कोटा भितरु करेक्ट को पीक्यूआरएस टी भितरु व्हिच वन इज करेक्ट पी का डिनोट करे क्यूआरएस का डिनोट करे एंड टी का डिनोट करे कोन आंसर ऑब्वियसली पी डिनोट करे आर्टेरिया रो कंट्रैक्शन को कहिले हम एबे क्यूआरएस डिनोट करे वेंट्रिकल रो कंट्रैक्शन को टी रिप्रेजेंट करे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन सो आंसर कोन हबो complex QRS 1 complete pulse peak T initiate of total cardiac contraction peak P and R systolic and diastolic blood pressure कोन हबो को बढ़िया क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस को हम गोटे वन कॉम्प्लेक्स पल्स कहि परिया दीटा को वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होउछ माने ऑलरेडी आई हैव म्यूटेड हेलो 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 शुभश्री डायमेंशन इनसाइड अच्छा को माने बेसिकली ड्यू टू द टेक्निकल इशू एंड आई एम सॉरी टू से साउंड आसुनी एबे आसला पूर्वा धनश्री अंकिता ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आउ का वेट करिया कि आसंतु न आसंतु क्वेश्चन करी चलो जहाँ हम देखा ताले क्वेश्चन पचारा इफ ड्यू टू द सम इंजुरी द कडाई टेंडन ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल क्वेश्चन पचारा ड्यू टू द सम इंजुरी इफ द कडाई टेंडन ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ द सम valve of the human heart is primarily non functional कडाई टेंडन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो बेसिकली आम जाने कडाई टेंडन टा कौट थाए मन पड़े तो जस्ट गोटे ओवरऑल स्ट्रक्चर करदे राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड तो बेसिकली जो कॉलमनाई कॉर्नियाई रहा वेंट्रिकल प्रोजेक्शन एंड वेंट्रिकल प्रोजेक्शन जो कॉलमनाई कॉर्नियाई रहा कॉलमनाई कॉर्नियाई ऊपर पापिलारी मसल्स रहा तो पापिलारी मसल रू बाहर थाए कौन ना बेसिकली कडाई टेंडन जे कि ट्राइकस्पिड वाल्व लगे तो पचार कि जदि कडाई टेंडन टा नॉन फंक्शनल हो गला ताल ब्लड फ्लो टा कौन हम आम जाने राइट वेंट्रिकल ब्लड टा कुआड जाए पल्मोनरी आर्टरी लंग्स जाए तो जिते राइट वेंट्रिकल ब्लड टा पंप करे स्ट्रक्चरली सपोर्ट दिए कडाई टेंडन टा ट्राइकस्पिड वाल्व को तो ऑब्वियसली एटा यदि नॉन फंक्शनल हम तो यार फ्लो टा टिके रिड्यूस हम तो आंसर विल बी द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस यस बढ़िया सोनालिसा प्रज्ञा संतोष अभिस्मिता शुभांशी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which two of the following changes I to double I to IV and question from 2010 NEET बेसिकली आम प्लेन टू पोलर एरिया को जाऊे हाई अल्टीट्यूड एरिया को जाऊे सो से केस रे कौन हो इंक्रीज द रेड ब्लड सेल साइज रेड ब्लड सेल रो साइज के इंक्रीज हुए नंबर टा इंक्रीज हुए दैट इज आम प्लेन एरिया रू पोलर एरिया को जाए जोटा आम अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड जाए तो आमको बेसिकली अल्टीट्यूड सिकनेस हुए अल्टीट्यूड सिकनेस रे कौन हुए ना आम बेसिकली कौन हम ना आरडीसी वोमिटिंग हम एंड 3 मास रहीगला पर आम आरडीसी काउंटा बढ़ी जीवो एंड ब्रीदिंग रेट भी बढ़िबो थ्रोम्बोसाइट किसी नहीं तो आंसर विल बी डबल आई एंड ट्रिपल आई एंड वेयर इज द ऑप्शन डबल आई एंड ट्रिपल आई एंड यस ऑप्शन ए 29 ए परफेक्ट देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 fastest distribution some injectable material medicine with no risk of any kind can be achieved या कौन लिखा है can be achieved by the injecting into हमें जानी चाहिए सब एवढा सब कोथरे भेन तो that is भेन चलो नेक्स्ट
31 given below 4 statement and human blood circulatory system. That is artery are the thick wall and they have narrow lumen. Artery ro thick wall, narrow lumen as compared to the vein. More than option correct correct पचार ना. तो basically artery रो thick wall, yes, artery रो thick wall and narrow lumen compared to vein ठीक अछि. Angina जोटा कि हमें chest pain बोली कहूचे medical term रे. Angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced. भूल. Angina केतेबेले हो chest pain केतेबेले start हो जेतेबेले no enough oxygen reach to the heart muscle. जेतेबेले heart muscle को oxygen पहुंचबनी सेतेबेले हमर chest pain start हो. In medical term it is called as angina pectoris. So एटा भूल. And the person with blood group AB can donate the blood to any person with any blood group. Bhul. AB blood group ta receive kari paribo. Calcium ion play an important role in the blood clotting. तो answer कौन होगा? That is I and IV. Yes, I think I and IV and option will be 31A. Perfect. 32 चलो. The hemoglobin content 2010 रो question. The hemoglobin content for 100 milliliter. Every 100 milliliter blood रे केते hemoglobin थाए 12 रु 16 मिलीग्राम. ठीक अछि. The answer will be D. 12 to 16. Yes. चलो next question. There is no DNA in mature RBC. A mature spermatozoa and enucleated ovum. Enucleated मान तो न्यूक्लियस नहीं. Hair root नुह. Mature spermatozoa नुह. Mature RBC. Answer will be 33A. Enucleated माने न्यूक्लियस absent. Enucleated ovum कहि परिना. Mature RBC रे तो DNA भी absent. Next जिबा. Question number. In standard ECG, which one of the following alphabet is the correct representation of a respective activity of the human heart? Human heart को नेकरी को. A होची start of systole. P होची depolarization of atria. Obviously हमें जानी चाहिए P क्या है? Depolarization of atria बा contraction of atria बा systole of atria. एया. चलो तो बर्तमान पाई एई क्वेश्चन लास्ट करो तापर हमें आ गोटे नेक्स्ट लाइव अछि दैट इज हमरो नीट रिगार्डिंग सो इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिगार्डिंग सो दैट हमें इटी एंड करबा एंड से लाइफ में प्रिपरेशन होबा. ग्लोबुलिन कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन. ऑब्वियसली हम जानि छै ग्लोबुलिन रो काम कोन फॉर द डिफेंस मेकानिज्म जेंति इम्यूनोग्लोबिन सब अछि. आईजीए जेंति कि मदर रो कोलेस्ट्रॉल रे थाए. आईजीई एलर्जिक रिएक्शन रे. तो इम्यूनोग्लोबिन बा ग्लोबुलिन रो फंक्शन होची फॉर द डिफेंस मेकानिज्म. कंपेयर टू द ब्लड आवर लिम्फ हैज. हमर लिम्फ रे कोन 2009 रो क्वेश्चन. ब्लड को जदि हमें कंपैरिजन करिबा लिम्फ रो काम कोन. लिम्फ हैज प्लाज्मा विदाउट द प्रोटीन. मोर डब्ल्यूबीसी इन नो आरबीसी. मोर आरबीसी. तो आंसर विल बी मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी. एंड क्वेश्चन नंबर आई थिंक 36. 36B. अभिस्मिता, प्रज्ञा. Perfect. 37. एपटे थिला क्वेश्चन बोधे. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहिला. ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रहिला. मोस्ट एक्टिव फागोसाइटिक ब्लड रे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट रहिला. तो आउ जहा बाकी क्वेश्चन रहिला हमें नेक्स्ट क्लास रे यारो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया. देन हमें न्यू चैप्टर कोन स्टार्ट करिवा. तो आई होप कि तुम को भल लागिथिबो एंड जदी कार को क्वेश्चन डाउट रहला देन यू कैन कमेंट. एंड तुम पे होमवर्क रहला जो माने देखुचो तो एई क्वेश्चन तुम पे होमवर्क रहला कोटा दैट इज क्वेश्चन नंबर ब्लड passes from the post to right atrium heart due to the. तुम पे दैट इज क्वेश्चन रहला 37. 37 तुम पे क्वेश्चन पॉज करके देखिबो. 37, 38 एंड 39 हिस्टामिन एंटीकोआगुलेंट हेपारिन के रिलीज करे. एंड 40, 37, 38, 39, 40 एंड 41. 41 जदि तुम एनिमल किंगडम पढ़ाई नहीं बट जहार मन थी करिवो. तो यही तुम रहा होमवर्क. तो यहाँ तुम कमेंट रे करिवो
जोड़ा देली 38 39 40 41 ठीक अच्छे 38 39 40 41 एटा तुम होमवर्क रहा दैट इज कमेंट्री कर एंड मुझे देखी कौ पिला बेसिकली करुच एंड कौ मैंने करूना चलो प्रज्ञा सोनालिसा पूर्वा धनश्री अंकिता शुभांशी मिस्टर जावेद चलो तो नेक्स्ट क्लास रे अगेन देखा एंड न्यू चैप्टर को आनिकरी एठी हमें क्लास को दैट इज एंड करवा एंड थैंक यू सो मच कि तुम मैंने बेसिकली एते टाइम देला आई होप कि तुम मानको नियति बेनिफिट हेइथिबो चलो रंजिता थैंक यू ओके